Good morning, students. So, class 12, we were discussing about the chapter Memories of Childhood. Memories of Childhood. Now, we have already gone through both the stories which are given to us. The first one is the cutting of my long hairs, and the second one is we two are human beings. The cutting of my long hairs is written by Zetkalasa. We will be brushing up with the main points of both the stories today. The cutting of my long hairs begins with the narrator's first day in the land of apples, and that day was very bitter cold one, and our narrator too got a very bitter experience that day. The place was noisy and the people were murmuring in an unknown tongue, unknown language, which our narrator was not, उसको नहीं आती थी. इंडियन गर्ल्स यहाँ भारतीय लड़कियां नहीं, रेड इंडियन ट्राइबल गर्ल्स है, उनको डिनोट कर रहा है. They were there in stiff shoes and close clinging dresses. She felt quite uncomfortable in the dining room. कौन हमारी जो नरेटर है, she was not at all feeling comfortable there because she was not aware about the rule and regulation of the place. Her friend Jodwin, she gives her a terrible warning. She overheard the pale-faced woman. The woman was talking about cutting the long hairs of Zetkalasa. ये information उसकी friend उसे देती है. The narrator decided not to submit but to struggle. Apart from knowing this fact that वो कितना ही उनसे झगड़ा कर ले, कितना ही लड़ ले, लेकिन वो उनसे जीत नहीं सकती. Apart from this, narrator जो है, she decided and make up her mind to fight against them. अब the narrator disappeared and hid herself under a bed in a very dark room. But finally, she was caught. She was dragged, taken downstairs and tied fast in a chair. And her long hair was cut. She was helpless and no one even tried to comfort her, console her. And this was the worst thing which she felt about the day, about the people, about the place. Our second story is written by Bama. We two are human beings. This story tells the problems of caste discrimination. कैसा महसूस करते हैं जिन लोगों के साथ caste discrimination होता है. The narrator used to cover the distance from her school to home in half an hour to an hour. It could, however, be covered in 10 minutes. Games, fun, shows, snake charmer, monkey, sweets, snack stalls, they all things attracted her and stopped her. Everything stopped her and drew her attention on the way. One day, she saw an elder of her carrying a street food packet. She was very surprised to see the manner in which that old person was taking the parcel. He didn't touch it but held the packet by its string. He bowed before the zamindar who took it and started eating. The narrator felt very funny and she narrated this funny story to her elder brother, जिसको कि वो अन्ना बोलती थी. Anna told her that the man was not being funny. And Anna narrated the entire class discrimination thing to her. The incident made her angry. She was provoked and wanted to touch the packet herself straight away. उसको मन था अभी जाके मैं उस पैकेट को टच कर दूं. She wondered why the rich people consider others as human beings. क्यों उनको नहीं क्यों वो उनसे अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, है ना? ऐसा उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही थी. बट अन्ना टोल्ड हर they belong to a low caste. They were never given honor and respect. If they learned, पढ़ेंगे लिखेंगे, then only they could gain respect on their own. These words of Anna, they
have a very deep impression on her. बहुत इफेक्ट करा इन वर्ड्स ने. From that day onwards, she made up a point that she'll study very hard. उस दिन से ठान लिया उसने कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगी, बहुत मेहनत से करेगी, और उसने ऐसा किया भी, है ना. ये सारी चीजें उसने करी भी. एंड शी बिकम द पॉपुलर राइटर ऑफ हर एज. So these are the two stories which our chapter is talking about. दोनों autobiographical note में है. ये stories जो लिखी हुई है दोनों autobiographical note में लिखी हुई है. Now we will be discussing few questions which are very important from the aspect of board exam. First question which I am taking is, both the units, both the stories of memories of childhood, they present autobiographical episode from the lives of two women जो कि marginalized community को belong करती हैं. So question generally क्या पूछा जाता है? To describe the main issue raised as well as the common feature highlighting in them. इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के दोनों स्टोरीज जो हमें नरेटेड हैं, कॉमन फीचर क्या हाईलाइट हो रहा है उनमें. देखो, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन. बोथ ऑफ देम दे हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. किस तरह से गलत बिहेवियर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोगों के साथ होता है, ये हमको यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. द पीपल ऑफ दीज कम्युनिटीज नेवर रिसीव ऑनर एंड डिग्निटी ड्यू टू देम, ड्यू टू देयर बिलोंगिंग टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, हर आइडेंटिटी एंड हर डिस्टिंक्ट कल्चर, उसको मेन जो टारगेट है वो रखा गया है. शी लाइक टू वेयर लॉन्ग एंड थिक हेयर्स, but the baleful woman and the other, they dragged her out. She was tied in a chair and she gnawed off her long hairs. We too are human being. हम क्या देखते हैं? The Tamil Dalit writer जो है, she presents the struggle of a girl of a low caste. The people of low caste are never respected and never honored. They have to carry a food packet by its string without touching it. The girl in We Too Are Human Beings struggles and stands first in the class. She attains equality and honor. The most common feature in both these episodes is the struggle and fight against racial and social discrimination. They don't take oppression, exploitation and injustice meekly. They fight against them. पूरी कोशिश करती हैं उसके साथ लड़ने की और जीतती भी हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है, डिस्क्राइब हाउ द नरेटर इन कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स रेजिस्ट एंड फाइट्स अगेंस्ट द अटेम्प्ट ऑफ shingling her long and heavy hairs, and how is she ultimately made to lose her distinct culture identity. कैसे आंसर करेंगे इसको? देखो, the narrator's friend Jodwin gave her a terrible warning. She knew a few words of English. कैसे उसको पता कैसे चला? वो भी तो उसी ट्राइब से आई थी, लेकिन वहां रहते हुए उसको कुछ इंग्लिश वर्ड्स है जो पता चल गए थे. She was overheard the pale-faced woman. She talked about cutting of the long and the shingled hair worn by her friend. And it was a shocking news. Their mother had taught them that shingled hair was worn by the cowards. Now Jodwin advised her to submit. वो उसकी जो फ्रेंड है वो उसे एडवाइस करती है कि भाई देखो, कुछ होना जाना नहीं है, तुम सरेंडर कर दो. लेकिन नरेटर काला सा ये जानते हुए कि अगर वो लड़ेगी तो भी हार जाएगी, लेकिन वो हार नहीं मानती है. द नरेटर disappeared unnoticed. She crawled under the bed and cuddled herself in the dark corner of the room. She shrugged with fear when she heard footsteps nearby.
voices become widely. She was carried downstairs and tied fast in a chair. Then they gnawed off her long hairs. No, काट देते हैं, हटा, रिमूव कर देते हैं उसके जो लंबे बाल होते हैं. No one came forward to help her. उसको सबसे ज्यादा दुख इस चीज का होता है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए जो है वो आगे नहीं आ रहा है. So thus the narrator lost her distinct culture, recognition and identity. Now she was an ordinary little man, now one of many little animals driven by a herder. ऐसा उसको फील होता है, उसको महसूस होता है. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज जो है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि डिस्क्राइब हाउ द नरेटर अटेन्स ऑनर एंड डिग्निटी इन स्पाइट ऑफ हर हम्बल बर्थ. बामा से रिलेटेड है ये, बामा को एड्रेस करके कहा जा रहा है. द नरेटर इन वी टू were human beings. She passes through different phases of mental and physical development. The role of her elder brother Anna is shaping her personality can't be minimized. उसकी विचारधारा को, उसके थॉट प्रोसेस को एक सही डायरेक्शन जो है वो उसके बड़े भाई ने दी. अब he inspired her to fight against inequality and untouchability. उसके भाई ने ही जो है उसको प्रोवोक किया इन सब चीजों के अगेंस्ट में लड़ने के लिए. द नरेटर सॉ threshing floors set up at one corner of a street. The old man of a street attracted her attention. The elder person, he came along from the direction of the bazaar. He was a big man, very old man, carrying a small packet of food by its string without touching it. She thought it is quite funny. She narrated the incident to her elder brother, but he was not at all assumed as she was. The man belonged to a lower caste. He couldn't touch the food packet. She felt terribly sad. She felt so much provoked and angry that she wanted to touch those varas herself straight away. But Anna जो है told her, shaped her learning and tell her that how किस तरह से वो रिस्पेक्ट अपने लिए गेन कर सकती है by giving importance to education and learning and prosperity bring honor and dignity. अगर ये दोनों चीज रहेंगी तो अपने आप प्रॉस्पेरिटी आएगी और प्रॉस्पेरिटी साथ में ऑनर और डिग्निटी को लेके आएगी. Now the narrator was inspired by his words. She studied hard and stood first in class always. And later on वो क्या है, अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी राइटर जो है वो निकल के सामने आती है. See, children, what my point is here, in English especially, if you are able to understand the core value of the chapter, you are able to understand each and everything. If we are able to understand the theme of the chapter, what basic things our story is talking about, क्या वो किन थीम्स के बारे में बात हो रही है, किन एजेंडास के बारे में बात हो रही है, किस बेसिक मोटिव्स को लेके बात हो रही है. इन इंग्लिश इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस, वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन जो गिवन है हम उसको आंसर कर सकते हैं अगर हमको ये पता है कि भाई हमारा चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है. सो रीडिंग चैप्टर वर्ड बाय वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये तो आप लोगों को करना ही करना है. जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर गिवन हैं उन चैप्टर्स को वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है. हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके आप डिक्शनरी में से ढूंढ सकते हो वर्ड्स. जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है एनी टाइम यू कैन कॉल मी. सो वी ऑल टुगेदर, नॉट ओनली यू, वी ऑल टुगेदर हैव टू वर्क very hard. Don't worry, don't panic. Whenever we will be back, we will be at a stand कि जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं how to score 95.
above 95 and you know this thing very well that मेरी गिनती शुरू 95 से होती है, पता है ना ये? चलो, वेरी गुड. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट this eating by formula was not the hardest trial of the first day. Now, what was the hardest trial that Kala Sa was yet to face after an unpleasant experience in the dining room? Questions पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग है, लेकिन आंसर्स हमारे लगभग वही निकल के आ रहे हैं, है ना? चलो, तो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन. देखो, the first day at school in the land of apple was a bitter cold one. The landscape was dull, the snow still covered the ground and the trees were bare. A large bell rang for breakfast. A pale-faced woman seemed to be supervising all over the activities of the students who were present there. The Indian girls wore sleeved aprons and shingled hairs. A small bell was tapped and the pupils they drew their chair from under the table. A second bell was sounded. All were seated. She caught the eyes of that pale-faced woman upon her. She was keenly watched by the strange woman. Then a third bell was tapped and everyone began eating. उसके हर मूवमेंट पर जो है उस लेडी की नजर थी. फॉर Zetkala Sa, this eating formula was not the hardest trial in the first day. Late in the morning, her friend gave her a terrible warning that she had overheard the pale-faced woman talking about cutting their long wavy hairs. Among the Indians, among that particular tribe जिसमें जिसको Zetkala Sa belong करती है, short hair were worn by mourners, the shingle hairs by cowards. जोधविन जो है, she cautioned her to submit. उसको बोलती है कि सी लड़ने से कोई फायदा नहीं है, we must surrender. But Zetkala Sa जो है, she rebelled. She decided to fight against the injustice which is happening with them there. वो कोशिश करती है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो उससे लड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेगी. इतनी जल्दी जो है वो गिव अप नहीं करेगी. तो शुरू से हम ये देखते हैं कि सिंस द चाइल्डहुड ऑफ दीज टू राइटर्स दैट स्पार्क इज देयर. कुछ कर गुजरने का, कुछ लोगों से कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का जो स्पार्क है, ये इन दोनों राइटर में हमको इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ देयर चाइल्डहुड वहीं से दिखाई देता है. दैट इज वाई ओनली दीज टू गर्ल्स जो हैं दे वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन लाइफ. जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको सॉल्व करने में और क्या करने में, अपना पूरा करियर बनाने में, अपने आप को इतना अच्छे से सेटअप करने में ये दोनों जो हैं वो कामयाब रही. तो बाय बर्थ, बाय चाइल्डहुड हम देखते हैं कि इन दोनों में कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग से कर देने की क्षमता इन लोगों में थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर मेमोरीज ऑफ childhood. So you will be going through all the questions. You will be going through the summary which already I have provided you in the notes. I have already provided you the theme of the chapter. किसके बारे में बात हो रहा है. We have already discussed the few questions which are important when we talk about board exam. ये सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं. इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो थर्सडे को वी विल बी हैविंग अ डाउट क्लास एट जूम. यू कैन ज्वाइन दैट क्लास, है ना. आप उस क्लास में आए, ज्वाइन करें उसको, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रैक्टिकल लेवल पर हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे.
So with the end of this chapter, we have ended Vistas 2.